भारत जोड़ो यात्रा मैं रुकेगा नहीं। कानपुर सर्दी में 40 मरे, पूरे भारत में शीतलहर, सर्दी से कांपा भारत। राहुल गांधी की टी शर्ट पर कराएंगे रिसर्च। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राहुल को हाफ टी शर्ट में क्यों नहीं लगती ठंड, शोध का विषय। बेवजह लोग कर रहे हैं दिमाग अपना खर्च। मेरी टी शर्ट में है कितना दम, हो रहा है सर्च। कौन समझाए भैया, ये टी शर्ट नहीं, ये है सत्य का कवच। जो ना समझे भैया इस बात को, वो करता रहे रिसर्च। हाँ भैया, जो बोला वो है बिल्कुल सच। ये टी शर्ट पॉलिटिक्स भी ना हो गई है टू मच। कदम कदम बढ़ाए जा, टी शर्ट के गुण गाए जा। ये सर्दी भी क्या चीज है, टी शर्ट पहन भगाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, टी शर्ट के गुण गाए जा। ये सर्दी भी क्या चीज है, टी शर्ट पहन भगाए जा। Co-presented by Star Health Insurance, the health insurance specialist. Co-presented by Panasonic, create today, enrich tomorrow. Co-powered by Green Lamb Laminates, kuch mera, kuch tumhara. Co-powered by the bold look of Cola. Co-powered by Samsonite, tested like Samsonite. Indian Oil, pehle Indian, phir oil. Good evening, hello and welcome. You're with the news today, your primetime destination news, newsmakers, talking points. The big talking point tonight, the expose of our Olympic heroes claiming they face sexual harassment. How will they get justice? Dangal for justice. That's going to be our special tonight. But first, as always, it's time for the 9 headlines at 9. Wrestlers raise the pitch against Federation boss and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh. Say they will not end their dharna till he is removed, and Federation disbanded, claim they have proof of sexual abuse. Supreme Court Collegium backs openly for gay lawyer Saurabh Kirpal as Delhi High Court judge disagrees with centre which opposed Kirpal openly, declaring his sexual orientation. Massive outrage over a BBC documentary on Narendra Modi. Rishi Sunak says he doesn't agree with the characterization of Modi in the film. Centre calls documentary a peddling of narratives. British MP says Mr. Modi must answer. Prime Minister on his second visit in a week to pole-bound Karnataka inaugurates development projects worth 10,000 crores. PM Modi also holds a mega rally in Mumbai ahead of the crucial BMC poll, launches 2 metro lines. Congress Yatra enters last leg now in Jammu and Kashmir. Rahul Gandhi slams the BJP and RSS, accuses them of creating atmosphere of hate and fear in the country. NC Chief Farooq Abdullah, PDP's Mehbooba Mufti to march along with him in the Yatra. Infighting in the Rajasthan Congress resumes. Congress MLA Sachin Pilot blames Chief Minister Gehlot for repeated paper leaks and political appointments of retired bureaucrats while sidelining party workers. Air India P-Gate accused. Shankar Mishra banned by Air India for 4 months. Other airlines may follow suit. World's youngest female head of government and New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern steps down, citing burnout. Labour MPs to vote on a replacement leader on Sunday. Reliance Industries Anant Ambani gets engaged to Radhika Merchant. Gala ceremony being held at Antilla. हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे. Wrestling heroes enter the ring once again. The bosses have made the Akhada dirty, claim the wrestlers. सर कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा. This
This bout is for total cleanup. इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। The rot runs deep. एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं। जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं। Government forms 3-member probe panel. But is that enough? अकेले आदमी को डरा के रखा जाता था, तो एकजुटता दिखाई खिलाड़ियों ने, तभी ये पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि आप सबको पता है पावरफुल आदमी हैं, तो उनके अगेंस्ट जाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है कि जिंदगी को खत्म ही कर लें। अगर जिंदगी को खत्म ही करना है तो जिसने गुनाह किया क्यों ना उसको सजा दिलवाई जाए। Olympic heroes are calling it a fight to the finish. This is dangal for justice. That's right, dangal for justice. Never before in this country have we seen what we've seen in the last 48 hours. India's top Olympians on the street protesting against what they say is the big boss of the Wrestling Federation, accusing him of sexual harassment and worse. Vinesh Phogat is a world champion. Sakshi Malik is an Olympic bronze medalist. Bajrang Punia and Ravi Daya are Olympic silver and bronze medalists. All of them have come together along with a slew of wrestlers accusing the Wrestling Federation of India chief Brij Bhushan Sharan Singh, a 5-time MP, and other officials of sexually harassing many junior athletes. The government has now been forced to form a 3-member panel to probe the charges. The athletes, though, say they will not end the dharna unless the Wrestling Federation India chief is sacked. I went on the street to speak to the wrestlers who are at Jantar Mantar to find out just why पहलवानों को इतना गुस्सा क्यों आता है. Listen in to what they had to say. हमारे ओलंपिक विनर्स जो कुश्ती में ओलंपिक मेडल लेकर आए हैं, वो आज रास्ते पर क्यों आए हैं? Why are our Olympic medalists on the roads from wrestling? पूछते हैं बजरंग पूनिया जो एक तरह से लीडर बन गए हैं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, आप सब जीते हैं, लेकिन आज आप रास्ते पर क्यों आए हैं? क्या वजह हुई कि जो रेसलर मैट पे होता है आज रास्ते पर आ गया? देखिए सर, ये हमारे लिए भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुश्ती में इतना कुछ चल रहा है और उसके लिए आवाज़ उठाई तो हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। अगर हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने कुश्ती को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो यौन शोषण हो रहा था, एक मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था खिलाड़ियों को, उस चीज़ को हमने पता लगा उस चीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत समय से पता था, पर बहुत समय से ये पता था, फिर आज ही क्यों आप लोग आ गए? एकजुटता, क्योंकि सभी को डरा के रखा जाता था, अकेले आदमी को डरा के रखा जाता था, तो एकजुटता दिखाई खिलाड़ियों ने, तभी ये पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि आप सबको पता है पावरफुल आदमी हैं, तो उनके अगेंस्ट जाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इस समय ही क्यों किया? इतने सालों से अगर हो रहा था, आप इतने मेडल्स भी जीते थे, इस समय ही क्यों? कब से हो रहा है ये? ऐसा समय आ गया है सर कि ऐसा लगता है कि जिंदगी को खत्म ही कर लें। अगर जिंदगी को खत्म ही करना है तो जिसने गुनाह किया क्यों ना उसको सजा दिलवाई जाए। अपनी जिंदगी तो खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि वो अगर हमसे हमारी कुश्ती छीन लेंगे, अगर हमारे जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, जो नौजवान हैं, अगर उनका भविष्य ही छीन लेंगे, उनके माता पिता कहाँ जाएंगे, उनकी फैमिली कहाँ जाएगी, जिन्होंने रेसलिंग में इतना इन्वेस्ट कर दिया है। अगर मरने की बात आ गई है तो क्यों ना इंसाफ के लिए लड़ा जाए, और देश के लिए जो इतने इस लेवल तक बात आ गई थी। इस लेवल तक बात आ गई थी। अब सोचिए, हम 2 दिन यहाँ बैठे, कितने पावरफुल वो लोग हैं। 2 दिन हम खिलाड़ी जो देश की धरोहर हैं, प्रधानमंत्री जी सड़कों पे बिठाते हैं, अगर वो सड़क पे बैठे हैं और फिर भी उनका इस्तीफा नहीं हो रहा है, तो कितने बड़े आदमी हैं, आपको भी पता है इस बात का। तो डर है कहीं कि इतने बड़े आदमी के सामने आपने टक्कर ली है, वो फेडरेशन के चीफ है, क्या होगा आपके करियर का, इसके बारे में सोचा है साक्षी जी? नहीं सर, बिल्कुल भी डर नहीं है। डर किस बात का? जब हमसे जूनियर लड़की अपना करियर दाव पे लगा के, अपनी जान दाव पे लगा के यहाँ बैठी है, तो मुझे किस बात का डर है? मैंने तो कुश्ती को बहुत कुछ दिया है और कुश्ती के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं और कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ बैठे हैं। जब छोटे बच्चे नहीं डर रहे तो मेरा डरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर। ये आपके साथ हुआ है या
अन्य लोगों के साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ था क्या इस तरह का व्यवहार, या कुछ जो जूनियर हैं उन्हीं के साथ हुआ था? देखिए, जूनियर्स के साथ में भी हुआ है, सीनियर्स के साथ में हुआ है। जो लोग कोच और फेडरेशन चीफ दोनों करते थे ये सब? फेडरेशन अध्यक्ष जी सबके माई बाप हैं, उनसे नीचे फिर उनके जो लोग बैठे हैं, फिर वो तो हैं कि वो कहते हैं ना कि कौवे को रोटी डाले तो फिर बच्ची कुची जिसको मिल जाती है वो मिल जाती है, जो होती है वो खाई जाते हैं। तो अध्यक्ष जी मैन है, उसके बाद जो बचा कुछ आता फिर वो करते थे जो काम है, लेकिन मैन वही है। अगर वो उनका अगर हो गया समाधान तो नीचे वाले तो फिर अपने आप ही भाग जाएंगे। पर इतने मेडल्स आपको मिले, इसके बावजूद ये सब हो रहा है। उनका कहना है कि देखिए रेसलिंग में इतने अच्छे मेडल्स मिले, हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सर, क्या उनके दम पे मेडल आए हैं क्या? हमारे माँ बाप ने मेहनत की है, हमारे परिवार ने मेहनत की है, हमारे गाँव ने हमें आगे बढ़ाया है, हमारे देश ने हमें आगे बढ़ाया है, सराखों पे बिठाया, वहाँ से हमें हिम्मत मिली है। क्या उन्होंने अपने घर से पैसा दिया था? ये देश का पैसा है, हम देश के बच्चे हैं, इस देश ने हमें बनाया है, वो कोई नहीं होते हमें बनाने वाले, और ना ही वो मिटा सकते हैं हमें। अगर गलत करेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा। साक्षी, आप क्या कहेंगी? जो हमारे एक तरह इसमें कोई नेतागिरी तो नहीं है, आप कोई अध्यक्ष खुद तो नहीं बनना चाहती, ना ही आप किसी राजनीति से जुड़ना चाहते हैं? इसमें कोई राजनीति तो है नहीं, इसमें कोई पॉलिटिक्स का कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारी पहलवानों की लड़ाई है अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बस उसको बिल्कुल भंग करवाने के लिए और एक नई शुरुआत करवाने के लिए ये लड़ाई है, और कोई यहाँ सेल्फिशनेस नहीं है, कोई यहाँ पॉलिटिक्स का कुछ नहीं है। और आप सब एकजुट हैं। को एक ओलंपिक का गोल्ड मेडल दिलवा दीजिए, मैं जिंदगी में आपको नजर आ जाऊं कहीं। आप जो पूरा हिंदुस्तान जो कहेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं ओलंपिक मेडल के लिए आई हूँ, मुझे वो ओलंपिक मेडल चाहिए। और जब ऐसे लोग वहाँ पे बैठे हैं ना, ये ओलंपिक मेडल नहीं आएगा मेरा। उस सपने के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, हर एक कुश्ती के खिलाड़ी के सपने के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ। हम सब यहाँ आए हैं ना, हम सब दाव पे लगा के यहाँ बैठे हैं। और मैं आपको ये कहता हूँ कि कई महिलाएं जिन्होंने आपको कल टीवी पर देखा है, उनको भी एक तरह से एक प्रोत्साहन मिला है, उत्साह मिला है कि हाँ हम बोल सकते हैं। अगर इस तरह से हमारे साथ होता है तो अगर विनेश बोल सकती है, साक्षी बोल सकती है, तो हम सब बोल सकते हैं। ये एक तरह से आपने एक मैसेज सब औरतों को दिया है, केवल क्योंकि अब तक लगा था केवल पुरुष लड़ते हैं, अब महिलाएं भी लड़ने लगी है। बड़ी अच्छी बात है, ये गर्व की बात है सर। हम सोचते थे कि हम मैट से हौसला बढ़ा सकते हैं, आज पहली बार पता चला कि हम सड़क पे बैठेंगे तो भी हम देश का हौसला बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें खिलाड़ियों की ताकत का अंदाजा हो गया पहली बार। क्योंकि अब तक इतने कैमरा तो कभी आते नहीं थे जब रेसलिंग की मैच होती है, जो आज आ गए, जब आप रास्ते पर आ गए हैं, ये तो एक फर्क हो गया। कम से कम अब देश तो जानेगा कि, क्योंकि अब तक आप लोग बहुत कम बोलते हैं। इस बार में रेसलर जो है वो जो अपनी कुश्ती में दिखा देता है, लेकिन अब आप बोलने लगे हैं बजरंग जी। जी, बोलने का काम हमारा नहीं था, बोलने का काम आप लोगों का था। हमारा काम था देश के लिए मेडल जीतना, और ये हम भी नहीं चाहते थे ऐसा समय आए। सब कुछ अच्छा होता तो हम यहाँ क्यों आते? अपनी मेहनत करते। यहाँ 15-15, 17-17 साल के यहाँ बच्चे बैठे हैं, तो वो अपना भविष्य देख रहे हैं और हम उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। हम सीनियर हैं, हम उनके एक रास्ता जो अभी जो बंद कर रखा है वो खोल रहे हैं। हमारा काम सिर्फ उनको अच्छी लाइफ में अच्छे मेडल जीतना, वो चीज़ें सुविधा दिलाना, वो काम है। क्योंकि जो चीज़ें हम अब जो खिलाड़ी फेस कर रहे हैं वो आगे फेस ना करनी पड़े, वो इंडिया के कुश्ती के फ्यूचर के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। आपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात की, अध्यक्षों से, ऑफिशियल से बात की, उन्होंने क्या कहा है? देखिए, हम सरकार ने कहा है कि 72 घंटों में नोटिस दिया है ब्रिज भूषण शरण सिंह को कि आप जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, पर हमारे पास इतना समय नहीं है 72 घंटे का। देखिए, जब तक हम ये धरना जब तक देंगे, जब तक हमें कोई ठोस एक रास्ता नहीं मिल जाता। धरना चालू रहेगा जब तक कोई ठोस रास्ता नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम खुद बोल रहे हैं सर, अगर देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अगर हमें मिलने का समय दे, हम उनको ऐसे ऐसे प्रूफ देंगे, ऐसी लड़कियां सामने जाएंगी कि 72 घंटे तो आप छोड़िए कि 2 मिनट में वो इस्तीफा देंगे, और वो लेंगे। और वो जो बोल रहे हैं मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, मैं फांसी तोड़ लूंगा, वो हम सच करके दिखाएं। आपके पास प्रमाण है, आपके पास आई विटनेसेस है, लड़कियां आएंगी, बोलने के लिए तैयार है सर, हमारे पास बैठी हैं सर, कल एक हमारे पास सब कुछ बैठा है, तैयार है ओपनली बात करने के लिए, डिटेल देने के लिए, सब तैयार है सर हमारे पास। हम कोई ऐसे डर नहीं अब सर, अब तो क्या ही डर है। अब अगर हम पीछे हट गए तो वो मरवा देंगे, इतने पावरफुल लोग हैं। अगर आगे बढ़ गए तो बच्चों का भविष्य बच जाएगा। तो अब पीछे हटने की बात ही नहीं। अब तो पीछे हटने की बात ही नहीं है सर, अब तो यही जिएंगे, यही मरेंगे। अगर हमारा कुछ हो गया तो हम अपने घर पे जाके ट्रेनिंग करेंगे,
और अगर नहीं हुआ तो फिर देखी जाएगी, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। घर के लोग क्या कह रहे हैं जब उन्होंने देखा कि आप लोग सब रास्ते पर आ गए, वो क्या कह रहे हैं? घर में गांव के लोग क्या कह रहे हैं? बस फुल सपोर्ट है, उनको पता चला। आज तक हमने उनके आगे भी नहीं इतना ज़्यादा बताया था जितना हमने खुल के आगे आज पूरी मीडिया को बताया है। तो वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं कि ये क्या हुआ, आपने कभी डिस्कस क्यों नहीं किया। तो बस शुरुआत थोड़े से शुरुआत होके इतना ज़्यादा बढ़ गया ना ये चीज़ रेसलिंग में, मैं आपको बता नहीं सकती। हद तब हुई जब छोटी छोटी लड़कियां आके बता रही है, विनेश को बता रही है, मुझे बता रही है, तो मतलब कोई लिमिट भी तो होती होगी। एक यही चीज़ नहीं, ऊपर से बच्चों का फ्यूचर, पैसे नहीं मिल रहे, स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, हर चीज़ में जब एक चीज़ की हद क्रॉस हो गई ना, उसके बाद ये सिचुएशन आई है कि अभी ये स्टेप तो उठाना ही पड़ा हमें। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप मेडल जीती, आप मेडल ओलंपिक्स में जीती, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीती, देश का नाम आपने बहुत ऊंचा किया है। और मैं चाहता हूं कि जो देश प्रेमी वाकई है वो आपकी बात आज सुने। तो आपके एक तरह से देश के खेल प्रेमी और देश के प्रेमियों को क्या कहेंगे आज, क्या कहना चाहिए? जो पब्लिक आज देख रही है, जो आपकी फैन है, वो क्या कहेंगे उनको आज आप? हम यही कहते हैं कि हौसला बनाए रखिए, गलत है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। पूरा देश अगर हमारे साथ है, हम देख रहे हैं, हम भी फोन बीच बीच में देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, क्या व्हाट्सएप बहुत आ रहे हैं क्या? सब फोन व्हाट्सएप सब कुछ आ रहा है। सामने वाले जो लोग हैं जो अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अंदर अंदर पूरा सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की उन्होंने। हमारे साइड आ जाओ, हम पता नहीं क्या कर देंगे, क्या दे देंगे, बहुत कुछ हो रहा है सर अंदर अंदर, लेकिन टाइम आने पे सब खुलासे होंगे। और आप लोग सब एकजुट है, सब और सब अलग अलग अखाड़ा से, ऐसा नहीं है कि कोई वो बोल रहे थे कि मेरे साथ, हमने किसी को फोन करके नहीं बुलाया, सब अपने आप आए, उनको पता लगा है तब हमने कि अगर पूरा कुश्ती जगत यहाँ बुलाना है, क्योंकि देशवासी हमें मेडल जीते तब खूब प्यार देते हैं, तो अब हम इस स्थिति में है तो अब वो हमें और ज्यादा प्यार देंगे कि वो मेहनत करने वाले खिलाड़ी जो मेडल जीत रहे हैं, आज वो इस दलदल में घुसे हुए हैं, तो आज वो जरूर सपोर्ट। कल आप बड़ी इमोशनल हो गई थी, आप रोने लगी थी, ये बड़ा एक इमोशनल मोमेंट भी होगा आपके लिए। सर आप देखिए, मैं तो कल रोई हूँ, वो लड़कियाँ, कितनी लड़कियाँ हैं जो पल पल रो रही हैं अपने हक के लिए। वो सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हैं, वो इन जैसे लोगों से बच के रहना चाहती हैं। उनके माता पिता कितने डरते होंगे। और मैं हर दिन, ऐसा तो मेरा हर दिन जाता है रोने का। आप लोगों ने तो पहली बार टीवी के सामने देख लिया कि मैं रोई हूँ। ऐसे ऐसे दिन जाते हैं कि हम सोचते हैं कि काश मर जाएं, काश ये हो जाए, काश हम फ्लाइट में बैठते हैं कि काश ये फ्लाइट ही गिर जाए। वो दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा जब ये सब काम होंगे। तो जब एक खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल जीत रहा है, अगर वो ऐसी बातें सोच रहा है, तो आप देख लीजिए जो एक के बाद एक मेडल विनर आ रहे हैं, सब मेडल विनर। इसी वजह से आपने एक तरह से मीडिया को जगाया है, और ये इसकी मैं आपको बहुत दाद देता हूँ, आपको एक तरह से सलाम करता हूँ कि आप लोगों ने मीडिया को जगाया है जो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है। तो ये बड़ी काम कर रहे हो आप लोग सब, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। देखो हमें तो आप लोगों की बहुत ज़रूरत है और आप ही हमारी बातों को आगे बढ़ाओगे, और हमें आपसे पूरा विश्वास है। और हमें पीएम भूषण शरण सिंह अपने गांव चले गए हैं, वो तो गोंडा चले गए हैं। हम उनके घर गए थे, उन्होंने कहा वो गोंडा चले गए हैं। तो फिर हमें तो हाँ, देश छोड़ के ना भाग जाए। हमें थोड़ा सा पता लगा है कि वो देश छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर उनको गाँव ही जाना था तो वो गाँव से आए क्या करने थे यहाँ पे? और फेडरेशन इतनी दूर था, ये 100 मीटर पे फेडरेशन है, वो हमसे बात ही नहीं करने आए। जो आंखों से वो डराते थे, वो आंखें कहाँ गई? हमसे सामने आके बोलते क्या बात? तैयार है उनसे बात करने के लिए फेस टू फेस? बिल्कुल, हम तैयार हैं। बिल्कुल कोई चीज ही नहीं है कि हम नहीं बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी उनको बुलाएं, हमें बुलाएं, हम प्रूफ देंगे उनको। सामने फांसी तोड़ो हमारे, वो दिन मानेंगे हम। इतिहास में लिखा जाएगा, हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा कि लड़कियों के साथ गलत हुआ, उस बंदे को देश के प्रधानमंत्री जी के सामने, उन बच्चों के सामने फांसी तोड़ा गया है जिन्होंने उनके साथ में इतना गलत किया है। चलिए, आप लोगों ने कुछ खाना पीना खाया है कि नहीं? चल रहा है जी, ऐसे ही थोड़ा बहुत चल रहा है, वही चल रहा है। पानी चल रहा है आपको उसका? अरे आप लोग हमेशा खाना तो खा लीजिएगा, ये कोई भूख हड़ताल तो नहीं है? नहीं, भूख हड़ताल नहीं है, पर समय नहीं मिल रहा, क्योंकि आप लोग भी हमारे साथ इतना समय दे रहे हैं, हमें तो नहाने का समय भी नहीं मिला सर। कल से सो भी नहीं पाए। बस हम चाहते हैं कि अगले साल पेरिस ओलंपिक्स में आप और मेडल जीते, और जो आपकी मांगे हैं वो कोई सुने। कैसे जीतेंगे सर? जरूर जीतेंगे, आपकी मांगे सुनी जाएंगी, आपका आवाज कोई दबा नहीं सकता है। और मैं आप लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपनी बात जनता के सामने रखी है। साक्षी, विनेश, बजरंग, रवि, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
Now you've heard those angry voices from these 4 Olympian winners, but it's not just them. An entire generation, across generations, Sanjay Kumar, Arjuna awardee 1990s, Ashok Garg, another Arjuna awardee, all spoke to me today and each of them said the same thing. Enough is enough. Listen in. आप अर्जुन अवार्ड विनर हैं। ये हमें बताइए, आप लोग सब रास्ते पर क्यों आए हैं? हमेशा हमने देखा है जो कुश्ती करते हैं वो केवल अपनी कुश्ती से मतलब लगते हैं, लेकिन इस बार आप लोग सब इस तरह से रास्ते पर आ गए, इसका मतलब क्या माने हम? एक कहावत है जी हमारी पुरानी, आगे कभी न कभी तो घड़ा भरता है, तो कुछ घड़ा भर गया होगा और कुछ ऐसी स्थिति इकट्ठी होगी बहुत सारी। एक पॉइंट से ये बच्चे आज नहीं बैठे यहाँ पे, काफी दिनों से जो चीजें चल रही थी, वो 6 महीने लगा लो या साल लगा लो, जिस ढंग से चीजें सिस्टम जो चल रहा था उसका घड़ा भर गया। मैं खुद ओलंपियन अर्जुन अवार्ड खिलाड़ी हूँ, अशोक गर्ग। क्या नाम है आपका? अशोक गर्ग। आप ओलंपियन रहे हैं? अर्जुन अवार्डी हूँ। 92 का ओलंपिक खेला, 93 का मुझे अर्जुन अवार्ड मिला था। 2014 की बात है जी, 2014 कॉमनवेल्थ गेम जिसमें पूरे स्पोर्ट्समैनों की लाइफ बनती है, उस लाइफ में इसने अपने घर में बैठ के टीम बना दी कि ये जाएंगे, ट्रायल भी नहीं लिया किसी का। ब्रिज भूषण शरण सिंह ने टीम घर में बैठ के बनाई थी 2014 में। उनका कहना है देखिए हम इतने मेडल जीते हैं, इसका मतलब है हमारा फेडरेशन अच्छा काम कर रहा है। 2014 में इन्होंने अपने कोठी में बैठ के टीम सिलेक्ट कर दी, ना किसी की ट्रायल हुई। मैं और एक मेरा साथी इसके घर पे गए, अभी भाई ट्रायल तो करवाओ, तो हमारे को इसका जवाब ये था आप सीधे चले जाओगे या कुछ और करना पड़ेगा। ये खुद मुझे कहा था उन्होंने आपसे कहा कि खुद सीधे चले वापस चले जाओ, नहीं तो कुछ और करना पड़ेगा। कुछ बहुत बड़े पहलवान, ये खुद मेरे को कहा उसने, अगर आप सीधे साधे चले जाओगे या कुछ और करना पड़ेगा। इतने महीनों से अगर ये हो रहा है तो अभी क्यों हुआ कि आप लोग इतने सालों तक क्यों नहीं? आपने बच्चे डर रहे थे, मारने की धमकी दे देते हैं सर, मारने की धमकी दे देता है। ये तो अब ये हुआ था सिर पे से पानी फिर लिया है वो उधर से। मैं बताता हूँ, पहले भी आवाज उठाई है। हाँ। लेकिन क्या है इस लेवल ओलंपियन लेवल के कोई उसमें आवाज नहीं उठाई। आप लोग कोई राजनीति प्रेरित नहीं जी, हमारा किसी से राय पार्टी से आंदोलन किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। हम तो यहाँ दिल्ली में आए, नई दिल्ली में आए हैं, नई दिल्ली में आए थे तो अर्जुन अवार्डी अच्छे पहलवान आए हुए हैं, यहाँ को राजनीति नहीं है। अर्जुन अवार्डी आए हैं, पुराने रेसलर आए हैं, द्रोणाचार्य हैं। चलिए आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, कुश्ती जगत से रावण राज खत्म होना चाहिए। ठीक है, आप उसे रावण। Let me go straight across to Abhishek Mishra, our correspondent who's joining us at the moment with Brij Bhushan Sharan Singh, the man in the eye of the storm. Abhishek, lot of serious allegations are being made against Brij Bhushan Sharan Singh, from suggesting sexual harassment to intimidation. What does he have to say? Is he willing to at least step down pending an inquiry? आज तक और इंडिया टुडे पे आज हम बात करने जा रहे हैं उस व्यक्ति से जिसको देश सुनना चाहता है, जो खुद अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके के लगातार आरोप लग रहे हैं, तमाम चीजों को रखा जा रहा है। खिलाड़ी खुद धरने पर बैठे, लेकिन खुद कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रिज भूषण शरण सिंह, वो क्या कहते हैं, आज हम आपकी उनसे बात कराएंगे। ब्रिज भूषण जी, जिस तरीके से लगातार खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, आज की तस्वीरें पूरे देश ने देखी, आपको क्या लगता है, क्या संघ की तरफ से बातचीत की गई है, उन्हें मनाने की क्या बातचीत आज हुई है? देखिए, ये खिलाड़ी दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के हाथ का खिलौना बन चुके हैं। और दीपेंद्र हुड्डा को मैंने 2012 में चुनाव हराया था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर भी, और मैंने चुनाव हराया था। और ये मेरे ऊपर हमला नहीं है, मेरे बहाने कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला है और कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार तलाशने की कोशिश कर रही है। आप खुले तौर पे कह रहे कि राजनीतिक साजिश आप? देखिए, ऐसी साजिश मेरे साथ एक बार सन 1993 में भी कांग्रेस के द्वारा हुई थी और 30 साल बाद वही साजिश मेरे साथ दोहराई जा रही है। मैंने पहले ही कहा था ये षड्यंत्र है और इसके पीछे कोई ताकत है, और वो ताकत आज खुल करके आ गई। दीपेंद्र हुड्डा का बयान और अभिषेक, they are saying they have evidence. प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता हमलावर हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं उनके पास से पूरे सबूत हैं। आज बाकायदा खिलाड़ियों ने जब बात की प्रेस से, तो बार बार कह रहे हैं कि हमें बोलने मत दीजिए, बहुत चीजें खराब हो जाएंगी। वो खुलकर बात करके उनके पास पूरे सबूत हैं।
देखिए, मैंने पहले दिन कहा था कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उस सबूत को देश की जनता के सामने रखना चाहिए, और ये फर्स्ट डे उनको करना चाहिए था। आज नहीं, फर्स्ट डे ही उनको करना चाहिए था। और उनके पास मैंने पहले ही दिन कहा था कि अगर उत्पीड़न का आरोप मेरे ऊपर लगेगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। मैं 6 बार गोंडा की लोकसभा ने, यहाँ की जनता ने मुझको सांसद बनाया, 1 बार मेरी पत्नी को सांसद बनाया। मैं भी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि 2012 से लेकर के 10 साल हो गया मुझको प्रेसिडेंट बने, और 2008 से मैं कुश्ती से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन ये बताइए, अगर आप पद पर बने रहेंगे, आप जांच की बात करें, लेकिन निष्पक्ष जांच फिर कैसे हो पाएगी? लेकिन मैं अपराधी बन करके तो ऐसे इस्तीफा नहीं दे सकता, अपराधी बन करके इस्तीफा नहीं दे सकता। और अभी मैंने अपने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। देखिए, एक प्रोसीजर है, मैं चुना गया हूं, अकेले मेरा निर्णय नहीं है। मैंने देश की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। संजोग से 21 तारीख से, यानी कल ही खिलाड़ी सुबह आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ओपन नेशनल चैंपियनशिप है जो पहले से पूर्व निर्धारित थी, और जो हमारे बॉडी के मेंबर हैं वो पूरे देश से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन सबको इमरजेंसी में हमारे सेक्रेटरी ने एक बैठक कॉल की है। और 22 तारीख को हम लोगों ने बैठक रखी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी आरोप फेडरेशन के ऊपर, फेडरेशन के कोच के ऊपर, फेडरेशन के सचिव के ऊपर, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, उसको हम लोग कार्यकारिणी के सामने अभिषेक, वी हैव वीडियोस, वी हैव निर्णय लेंगे। अभिषेक, वी हैव वीडियोस, वी हैव हमारे पास वीडियो होता है, आपके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। क्या आप तैयार हैं इसके? बिल्कुल तैयार हैं। हम दुनिया की किसी भी जांच, मैं सीबीआई जांच के लिए तैयार हूं। मैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच हो उसको भी सामना करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं एक सवाल तो उसे पूछने का राइट मुझे नहीं है। हरियाणा के कुछ चंद खिलाड़ियों को छोड़ करके, हरियाणा के भी पूरे खिलाड़ी नहीं, चंद खिलाड़ी, एक परिवार कह सकते हैं, एक फैमिली कह सकते हैं, चंद खिलाड़ियों को छोड़ करके आज देश का कोई खिलाड़ी उनको समर्थन कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाले, इतना मान प्रतिष्ठा लाने वाले, वो राजनीतिक मोहरा बन सकते हैं, आपको लगता है? देखिए, उनका खेल समाप्त हो चुका है। अब उनमें से किसी का पदक आने वाला नहीं है लगभग। और रहा सवाल ये कि अगर मैं इतना खराब हूं तो 12 साल के अंदर एक भी जो हमारी यौन शोषण समिति है उसकी मेंबर है साक्षी मलिक। 3 मेंबर जो हैं, 2 मेंबर जो हैं, उसमें एक वो है साक्षी मलिक है। क्या उसको पता है कभी मेरे ऊपर कोई आरोप लगा? ये अचानक 10 दिन के अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है? ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है। ये हरियाणा में हो रहे चुनाव के लिए गोलबंदी है, और खिलाड़ी भी लगभग एक ही कम्युनिटी के हैं। आप इस्तीफा देंगे? 2 टूक सीधा सवाल, आप इस्तीफा देंगे? देखिए, मैं जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकता हूं। कोई ये मेरे घर का पद नहीं है। मैं चुना गया हूं, अपनी कार्यकारिणी की बैठक मैंने बुलवाया है, और हमारी कार्यकारिणी जो निर्णय करेगी उसको हम करेंगे। हम कार्यकारिणी से ऊपर नहीं है, देश से ऊपर नहीं है। जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं, लगातार आवाज आपके खिलाफ उठा रहे हैं, क्या उनके करियर के मद्देनजर उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई तो नहीं होगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि बदले की कार्रवाई का कोई सवाल ही नहीं उठा है। और अगर वो मेडल लेकर के आए हैं तो उस मेडल में मेरा भी पसीना लगा है, मेरा भी खून लगा है। वो मेडल अपने आप नहीं लेकर के आए हैं। मैंने उन सबको सुविधा दी है अभिषेक, और वो डिटेल में जाने का समय नहीं है। आज के 15 दिन पहले यही खिलाड़ी जो है हमारी इतनी तारीफ करते थे, कहते थे कि कुश्ती के भगवान है, और 15 दिन के अंदर निगेटिव सेट होता है, षड्यंत्र होता है, और 15 दिन के अंदर भगवान आज खलनायक बन करके घूम रहा है। और मैं देश से ऊपर नहीं हूं, और कोई मेरे घर का ये पद नहीं है। मैं लोगों के द्वारा चुना गया हूं।
संघ पर एक आध आरोप नहीं है, कई आरोप है। यौन उत्पीड़न बहुत बड़ा आरोप है। उसके बाद ये बात कही जा रही है कि सीनियर खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी होती है, जरूरत से ज्यादा ट्रायल लिए जाते हैं। एक चीज नहीं, कई चीजों पर उन्होंने अपनी मांग रखी। आप इस पे क्या कहेंगे? जो संघ के पूरे यहाँ तक कि बर्खास्त करने की बात हो रही है, आप खिलाड़ियों ने ये तक कहा कि आपके इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, आपको जेल तक ले जाएंगे, वो ये बात कही। चलिए, जेल हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ले जाएं वो। जेल 1996 में ही कांग्रेस पार्टी मुझको ले गई थी और नरसिंहा राव जी ले गए थे। मैं बाइज्जत बाहर निकल करके आया था। जेल की बहुत मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह ये है कि हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ साथ मुझे मिजोरम के खिलाड़ी की भी चिंता है, मुझे कर्नाटक के भी खिलाड़ी की चिंता है, मुझे मणिपुर की भी चिंता है, कमजोर राज्य के और कमजोर खिलाड़ियों की चिंता है, मुझे सेकंड लाइन, हिंदुस्तान की जो सेकंड लाइन है उसकी भी चिंता है। और मैंने सेकंड लाइन ऊपर कैसे आवे, मैं बिना ट्रायल के इनको भेज दूं, बिना नेशनल में ये न लड़ें इनको लगे। आपको क्या लग रहा है जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं? क्योंकि एक बात नहीं, मैंने जैसे कहा कई सारे आरोप हैं, चाहे वो वित्तीय गड़बड़ियां हो, बदतमीजी की बात हो, एक्स्ट्रा ट्रायल की बात हो। देखिए, वित्तीय गड़बड़ी या ये सब तो चीजें जांच में होंगी, जांच होगी। मैं भी मांग करता हूं कि कोई निष्पक्ष एजेंसी इस चीज की जांच करे, चाहे भारत सरकार करावे, और इसकी जांच होनी चाहिए। वित्तीय और यौन शोषण का आरोप मेरे ऊपर फिट नहीं बैठता है। और आरोप तो फिट बैठता है कि मैं किसी को डांट दूं, अनुशासन बनाने के लिए किसी को झिड़क दूं, लेकिन ये नहीं बनता है, मेरे ऊपर नहीं सेट होता है ये। लेकिन आपके जो कार्यकाल को 6 महीने ही बाकी रह गए हैं, और अगर देखा जाए तो तीसरे कार्यकाल के बाद चौथे कार्यकाल की संभावना तो है ही नहीं। तो ऐसे में क्या मिलेगा इस तरीके के आरोप लगा करके? क्योंकि आप पे जो बातें कही जा रही है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ओलंपियन खिलाड़ी कह रहे हैं जो देश के लिए गौरव लेकर। ओलंपियन खिलाड़ी कांग्रेस के हाथ में खेल रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में खेल रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में खेल रहे हैं। आज कांग्रेस बेनकाब हो गई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट की है, ये लड़ाई हमारी नहीं है, कांग्रेस सांसद बनाम बीजेपी सांसद है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे हरियाणा का चुनाव है, और इसके पीछे और भी ताकतें लगी हुई हैं। आपको पद को हटा करके क्या फायदा मिलेगा? Okay, there you have a defiant Brij Bhushan Sharan Singh virtually denying all the allegations, claiming it's a Congress conspiracy. Haryana Congress has goaded these athletes to make these charges. Joining me now, Swati Maliwal is Delhi Commission of Women Chairperson, Nandan Kamath, co-founder of Go Sports Foundation and a sports lawyer, Anna Mehrotra is also a sports lawyer, Neha Sharma, former Olympian and TD player, also joined me. Appreciate all of you joining us. I want to come to you, Swati Maliwal. You may have heard what has been said by Brij Bhushan Sharan Singh. One argument is that if there is evidence against him, there should be an FIR filed, and this should be a matter settled in the police, and that's where the athlete should go next. Firstly, I just fail to understand that this man has been sitting on the post of Wrestling Federation of India president for the past 13 years. Why can't he be made to resign so that the athletes, without any fear of any kind of intimidation, can actually go ahead and file their case? So first and foremost, he needs to resign. But should they have filed the case earlier? Why can't the other way around? Why should it not happen like that? And at the same time, Delhi police has heard all these athletes go on record stating that they have been sexually harassed by him, by other coaches, and they have witnessed several other women being harassed by these people, and they have evidence. So has the Delhi police approached these athletes? Has their statements been recorded? Has any kind of help been provided to these athletes? I think it's a matter of great shame for the nation that these are Olympian medalists. They have really brought laurels to the country, and they have been made to sit in Jantar Mantar in this cold, and they're actually crying and seeking help, and nobody wants to come out and help them. Whenever these people win medals for the country, then all the netas line up and they all want photographs with these athletes. And even this Mr. Brij Bhushan Sharan, I heard him say that he's also trying to claim credit for all the good work that these people have been doing, and saying that, meri wajah se in logo ko. So what do you intend to do? So what does the Delhi Commission of Women, all of this is taking place in the heart of the national capital. Will you encourage these women now to file FIRs? Will you all suo moto take this matter up? What do you intend to do? So we've already suo moto taken the matter up. I have met
all these athletes yesterday. I have had a long discussion with them, and we have issued notices to the sports ministry as well as to the Delhi police. I have asked for a copy of the FIR. I have asked for arrests in the matter, and I have also asked the sports ministry as to what is the internal complaints committee, what are the systems in place. There is no inquiry. All these athletes who are extremely strong and accomplished women, they have been forced to sit on a strike, and they are raising some very serious allegations. I fail to understand, why can't they be investigated? What are the systems in the ministry, and what steps have been taken in order to ensure that all these young athletes do not fall prey to predators? It's really unfortunate, and I just fail to understand what is the call for fame for this man who continues to be the Wrestling Federation of India, as if he is bigger than all these athletes put together. Why can't he be made to resign? He should first resign, and then a proper investigation should happen, and whatever is the court of law, whatever that says, ultimately we will accept. But first and foremost, this man has to resign. 13 years in any case is a very long time to remain in this, and I really don't see any call to fame except for him being a politician. Okay, let me leave it there. Swati Maliwal joining me from the Delhi Commission of Women. Thank you very much. I want to go to the lawyers. Nandan Kamath, you've tracked athletics. You've got a wonderful foundation that works among athletes. What's your sense? What can be done in a situation like these? Conflicting claims, counterclaims. Should the athletes have gone to the street to make their voice heard? Is that the only way? Or could they have approached? They claim they approached various ministries. No one was willing to listen. Yeah, Rajdeep, I think this is a real challenge and quite a unique situation that athletes are willing to speak up. And I think it's worth understanding what they put on the line when speaking up. Unlike other situations where people are employed by companies and perhaps there's sexual harassment at the workplace, here they're dealing with a single employer who is in charge of their careers in a very, very pervasive manner. So you're putting a lot on the line when making a complaint of this nature, which is essentially your entire career, with the allegations are against someone who has the potential to essentially put an end to one's career. And I think that puts a little bit of context on the seriousness of the issue. And more importantly, the way this has to be dealt with in a more independent manner. It's going to be very difficult for an internal complaints committee of the federation itself to resolve this matter. I think it has escalated to a point where there's going to be independent investigation required to determine facts. Because Anna Mehrotra, what would you suggest? Should there be, I come back to it, an FIR filed at the first instance? I haven't seen an FIR yet against Brij Bhushan Sharan Singh. Should these athletes now go and file that? Or should they first wait for the sports ministry to at least ensure that Brij Bhushan Sharan Singh is made to step aside till this investigation is over? When you listened to him on our interview just now, he seemed ready to brazen it out. No, I 100% agree that an FIR needs to be filed immediately, because I also haven't seen any complaint out there, nor under the POSH Act, nor under the protection of children. In case there's been any minor involved, then there is an act that talks about the protection of children from sexual offences. Of course, there is the POSH Act, which includes offences that may be made at a stadium, at a sports federation. It includes all of that. And of course, there are other provisions that, the National Sports Development Code in itself, in its Annexure 17, which was passed circulated as far back as in August 2010, mandated all national sports federations to ensure awareness around sexual harassment, right? So, of course, this gentleman, anyways, the last elections of the Wrestling Federation of India were held in 2019 February. He's been serving at the helm since 2011. His 3 terms are about to come to an end next month. Elections are anyways due. So I don't think this whole angle of him merely being suspended from the National Sports Federation as the president and or ordering an inquiry to that extent is going to be helpful. If he's done anything, then obviously the IPC and other. So you're saying this cannot just be limited to the sports federation. There has to be the criminal justice system in case he's guilty in any manner. Neha Sharma, absolutely. As a former Olympian, have you heard these charges not just in wrestling but other sports? Is this something that has taken you by surprise? Well, we had heard of these charges, and it
happens across sports. I mean, it happens across various professions. I'm so glad that the athletes got the courage to speak up. It takes a lot to do this. All of them have really literally put their careers on stake to come down on the streets, considering next year is the Paris Olympic year, and it's going to be a very, very intense next 1.5 years. Despite that, they have come down. It takes immense courage. And I feel this only motivates other athletes across other sports also to always speak up, because, people who are politicians really have a lot of power, and it becomes very, very hard for athletes to speak up when things like this come up, and then their careers, trials and selection, all of that is not transparent. So I think what is happening is just fantastic to clean up the system, and more importantly, give voice to the athletes. Brij Bhushan Sharan Singh, for our viewers, is a 5-time MP, 6-time MP, was with the BJP, is with the BJP, was briefly with the Samajwadi Party, is a Tada detainee, was arrested for sheltering Dawood Ibrahim's aide Subhash Singh Thakur in 1996. I remember interviewing him there. Serious allegations were made. He got off. But the fact is, do you have a Tada detainee as your wrestling federation chief? Nandan Kamath, you might have heard the interview where he said this is a Congress conspiracy against me, and that Haryana's athletes have got together. I mean, what does it say about the kind of people who are running certain federations? Here we are talking about Olympic glory, getting in more golds in a sport like wrestling where we've done well in recent times, and the federation chief almost takes credit for it. He's someone with this rather dubious past record, and is a very powerful politician. He's making it now a political issue, and I can tell you, Nandan, that all politicians were stopped from being part of this dharna. The left's Brinda Karat came there. She was asked to move away. So clearly the wrestlers don't want to make this political, but here is Brij Bhushan Sharan Singh making it political. What does it say about the kind of people who head these federations? I think that really the facts speak for themselves, and it's I think not worth stating any more than I think what you've stated here. But I think the important thing here is that facts have no politics, and I think what we have to get to in this case is get to the facts and use whatever procedures are available to find out what happened. And what's the best procedure, Nandan? In your view, what's the best procedure? So I think it's impossible for independent inquiry to happen within the federation itself. Normally, what you would have is a superior body like the IOA take over and run an independent investigation of this. But I think what you have to look at is the escalated risk that all these athletes have faced. In many other countries, this would be seen as aggravated assault, where you're essentially in a position of trust. So it's not only sexual harassment, but sexual harassment, if these allegations are proved true, by someone who is in a pervasive state of control. Whether it's a coach, whether it's someone who exercises power as the head of a federation, they actually have influence outside the ordinary. And when that influence is used in a way that is demeaning of athletes, putting them at risks of various sorts, I think that in many other jurisdictions, this would be seen as aggravated offense, an aggravated criminal offense if the facts were proved. And I think we have to look at it in that sense. This is no ordinary sort of harassment at the workplace allegation. This is a much larger one in effectively a quasi-public body. This might be a private body, but it exercises a public function. And when it does so, it exercises significant control over the lives of not just athletes, but anyone aspiring to be an athlete. And I think all of this needs to be seen in a much wider context. Well, those are very strong words coming from all of you, and I hope that someone out there is listening. Anurag Thakur, we are told, Sports Minister, will be meeting some of these wrestlers at 10 p.m. Mr. Thakur now needs to ensure that he walks the talk on this one, at least ensure that the Federation Chief steps aside pending an independent inquiry. Thank you all very much for sharing your views here on the news today. I just want to, for a moment, go back to Jantar Mantar, because earlier I spoke to one of India's most respected reporters on Olympics. He's covered several Olympics. Norris Preetham told me just exactly what this moment means for India's athletes. Listen in. With me is one of the country's most experienced Olympian sports reporters. He's covered 6 Olympics. Norris Preetham,
Appreciate your joining us. Norris, have you seen anything like this before? Where athletes come out on the street in this manner to take on the federation? There was once when people were against Mr. Gill in hockey, but I think this is something huge, unprecedented, I must say. At least, and especially from the wrestlers, who are not supposed to be. People generally say the wrestlers don't talk. They only can perform, they can't talk. But I think here is an example when they have taken up their rights and they're going to say something. So I think this is unprecedented in Indian sport. And what is also interesting is that the women wrestlers coming out. So normally, even when protests have taken place, they've usually been led in male-dominated sports. But today, the women wrestlers, many of whom have won medals. You were there when Sakshi Malik won a bronze medal at the Olympics. Women wrestlers coming out, does that also send out a strong message? Yes, I think it's a big day for Indian womenhood, I must say. And incidentally, more women in India have won medals in international right now than the men. So I think this is something very good. And Sakshi, Vinesh, I've seen Vinesh also winning medals in Asian Games. And even Sangeeta Phogat, who's an upcoming wrestler, they are doing extremely well. And I think their voice will be heard and should be heard now. Had you heard of allegations of the kind that have been made, sexual harassment in the past? There are whispers that this was known among sporting circles, but this is the first time people have come out and spoken about what was being whispered about earlier? Nisha Mallik, if you remember, Rajdeep, there was a swimmer from Bangalore. She met with a similar kind of harassment and she did raise her voice. But that time, I think, people like you were not there were no social media at that time. So it was not taken, I must say, seriously. But yes, people have been talking about it. And so I think after Nisha, this is a huge protest. And I think thanks to media, especially social media, that people have taken up. And I think it's a big sort of a lesson for other federations also to see that this does not happen again. What about these federation chiefs? You've known many of them and they remain in office for years. Brij Bhushan Sharan Singh has been in office for more than a decade. Are they people who really treat these federations as their personal fiefdoms? Is that the problem really? I think so. And I think compared to what has happened now, Suresh Kalmadi looks to me like a saint. Compared to this, Suresh Kalmadi looks like a saint. Yes. I mean, this is what at least Suresh was never accused of this. So he may have been other vices. So I think federations are indulging in these kind of things simply because the federation bosses are not into sports. They are politicians, they are business magnates, they are people, they are criminals. There are criminals who are bosses and they run like their fiefdom, as you said, which is absolutely right. Strong words again there coming from Norris Preetham. I just want to, in a way, show you a video now. You must recognize what we are dealing with, what these athletes are dealing with. This is Brij Bhushan Sharan Singh slapping a young athlete at a Junior Wrestling Federation meet. Now, this is the man who today told us that he deserves credit. He deserves credit for what our athletes have achieved, for what our wrestlers have achieved. This is the man. A Tada Detenu, a BJP MP, a powerful MP. Is he going to be protected now? Why is he, at least at the very least, not being asked to step aside, given the nature of allegations, pending an inquiry? That's the very least that should happen. Because what he is a symbol of all that is rotten in Olympic sports at times, where individuals believe that they have a fiefdom and they can do what they want with athletes. So I ask you as viewers today to think about this and whether these are the kind of people who should be heading our federations. That's a point to note. Yes, the athletes perhaps also now need to file an FIR, put that evidence before the court of law and let Brij Bhushan Sharan Singh face the law. A dharna may not be enough. What you will eventually need is a court of law for those who misuse their power. Think about it. Let's take a break at that point. When we return, we'll turn to some good news. And it comes today from Odisha, the home of hockey. Back in a moment.
You're watching an India Today special broadcast being brought to you from the stunning ski resort of Klosters, Davos. The 53rd World Economic Forum is back at the snow-clad slopes of Davos. The smartest minds gather to debate the world's biggest challenges: energy crisis, industry headwinds, geopolitical risks, social vulnerabilities. India Today and Business Today are at ground zero to bring you all the action. Catch top corporate tycoons, politicians and intellectuals as they discuss cooperation in a fragmented world. Watch the Davos brainstorm only on India Today and Business Today TV. Okay, now the bad news today came from the world of wrestling. Our good news today's story comes from Odisha, where hockey, remember, is the flavor of the season with the World Cup hockey going, and India has won again to enter the pre-quarter finals. We are telling you today the story, though, of a 71-year-old man who sold his business, mortgaged his land and spent over 2 decades scouting and nurturing young hockey players for the country. Take a look at today's remarkable good news story. Dominic Topo has made many sacrifices to pursue his love for hockey. He sold his small business, he mortgaged his ancestral land for 60,000 rupees. With that money, he started a coaching center in Kukuda village near Rourkela in Odisha over 20 years ago. मेरे बच्चे लोग बहुत उत्सुकता के साथ में, बहुत जोश के साथ में लोग खेल रहा है। मैंने वो लोग बोलता है कि सर हम लोग हॉस्टल नहीं जाएंगे, आपके यहाँ बहुत अच्छा शिक्षा है, हम लोग बहुत अच्छा लगता है, हॉस्टल नहीं जाएंगे, ऐसे बोलता है। उनका हालत तो अच्छा नहीं है बोलेंगे, क्योंकि उनका घर द्वार हम देखे हैं, उनका कोई इनकम सोर्स दूसरा तरफ से कुछ है ही नहीं। कैसे चल रहे हैं, कैसे क्या, वो तो नहीं जान रहे हम लोग। और जो ज़मीन उमीन बंधक दे के उनका अपना परिवार पोस रहे हैं। The 71-year-old scouts for talent in the villages. Not a trained coach, Topo honed his skills watching international players. मो दैनिक सार शिखाती आमे खेलुचे सेटा एक मास हेउची सार हमर ठारो पैसा नेउ नहांती आमे आशा रखिछु कि सार ठारो हमें सिखी कि इंडिया टीम रे खेली परिबा हम देशंकर ना रखी परिबा। Topo lives in this house. He earns a living selling wood from the sagwan trees he planted years ago. मेरा परिस्थिति बहुत अभी गड़बड़ हो गया, पहले तो ठीक चल रहा था, इसलिए मैं बच्चों के लिए सब कुछ मैं दे सकता था, उन लोगों को मैंने जो भी ज़रूरत पड़ता था मैं, और दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, इधर उधर मैं घुमा के टूर्नामेंट भी वगैरह हम उसको खिलाता था। लेकिन अभी पैसा का कमी है, मेरा अभी परिस्थिति बहुत ख़राब हो गया, वो अभी कर नहीं पा रहा हूँ। Topo has one wish. He hopes the Odisha government will build him a home one day. Bureau Report, India Today. Wonderful story. There are lots of people out there who do great service to Indian sport. And then when you see the likes of Brij Bhushan Sharan Singh running their sports like a personal fiefdom, you ask yourself, can we really become ever a true Olympic nation? Think about it.
I want to leave you with our image of the day that comes from Mumbai, my city, where Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the much-needed 2 metro lines. One of them connects Dahisar East and DN Nagar in Andheri West. The second line connects Andheri East and Dahisar East. The Prime Minister also took a ride in the metro, interacted with the public. Clearly, the BMC elections are close by, so you need every photo op you can get. Think about it. But the metro line is very welcome in a city where traffic is a huge issue. Thanks for watching. You stay well, stay safe. Good night. Shubh Ratri. Jai Hind. Namaskar. The fear is that while India's population seems to now be outstripping that of China, where are the jobs, the opportunities going to be created for this large population that we are confronted with? How do you see these numbers that are staring us in the face now? I mean, population was a curse. Obviously, a demographic dividend is not people, it is productive people. And I think we have to sort of put this in context. India's unemployment numbers have stayed between 4 and 8% since independence. But our poverty has been 35–40%. So I think the question to ask is really, do we have a jobs problem or a wages problem? I don't think we have a jobs problem. Anybody who wants a job can get a job, they just can't get the wages they want or the wages they need. So I would be careful with framing, linking population directly to jobs. I think we need to think about productivity, we need to think about wages. I mean, China had a huge advantage. I mean, in 1985, the trade deficit with the US was $6 billion. Now it's $310 billion. That happened because of China's population and obviously China's ability to make the 5 transitions which we call modernity, right? Farm to non-farm, rural to urban, informal to formal, school to work. So I would be careful with just saying a population is a curse. I mean, I think actually China losing a population equal to France, a working age population equal to France in the next 7 years is a child of their one-child policy, while India has a more organic control of our population. So I would be careful with positioning populations as either curses or as gifts. It's what you do with your population and can you make them productive. And we've proven that 5 million people in India can export more software than Saudi Arabia did oil last year, or 15 million Indians outside India can send us $100 billion of remittances. So I would just position this more as a productivity problem than a jobs problem. So interestingly, you're saying don't get into the binary of demographic dividend versus disaster. You're actually suggesting look at issues of productivity. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. With the merger, is popcorn going to get cheaper? A perennial question, right?
No, it's going to be affordable. It certainly will be affordable. I will drive that point further. At a time when input cost pressures have been felt by most industries, I really want you to flesh that point out. Also from a social perspective, a lot of people saying, well, you know, and there is legal certainty as an operator that we got from a recent order. But really, explain to our viewers, why is it so expensive? Are you making profits or are you covering your costs? Well, I think our balance sheets speak for itself. The EBITDA margins at which we work in the 15 to 18% range. And as you very rightly pointed out, the input costs, whether it's electricity, manpower, rental, all these are increasing at an increasing rate. Inflation pressures are there. So you have to cover your costs in some manner. At the same time, it's all demand and supply. We will price the product at a price that the consumer is willing to pay. So when we do get feedback, if the pricing is too high, we certainly roll it back in certain places. Have you done that in the Absolutely. It's a continuous process. Okay. And you don't think it's a matter for headline making? Not at all. Okay, I'll continue to press this conversation on movies because if I want to give him a moniker with his permission, he's India's movie man. 1,600 screens going to 3,200. By when, by the way, is it going to be 3,200? Well, I think it's going to take a few years. On an average, we'll put up another 200 to 300 screens per year. So it'll take us a while, because it has to go hand in hand with the mall development in India. Co-powered by